सो फाइनली इंडिया ये मैच जीत गया. इंडिया ने सीरीज लेवल कर दी. थैंक गॉड फॉर दैट. थैंक गॉड दैट बैसबॉल वाज नॉट एज इफेक्टिव इन इंडिया. थैंक गॉड कि हम बैसबॉल को डिफेंड कर पाए. लेकिन दिस मैच, द विक्ट्री डिड नॉट कम विद इट्स शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स, विद इट्स शेयर ऑफ लर्निंग्स. और मेरे हिसाब से देयर वर 3 लर्निंग्स जो इस मैच में हमें मिली या हमें लेनी चाहिए. एंड आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दोस 3 लर्निंग्स फ्रॉम दिस मैच in this video. Hello everybody, welcome to Cricket Flavors by me Ruchika. You can follow me on Twitter also now under @Cricket Flavors. Please subscribe to my channel. You can like this video, comment करके मुझे अपना opinion बताएं. I would really appreciate that. I promise to bring you videos regularly on all things cricket, especially with the Indian cricket team. तो बात करते हैं आज के मैच के बारे में. Thankfully we've been able to win this match. We have leveled the series. और आज का दिन उस विक्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज रेस्ट ऑफ द डेज इफ यू आस्क मी, इंडिया और इंग्लैंड का जो पलड़ा था वो बराबरी का चल रहा था. सिर्फ आज का दिन था वेयर इंडिया वाज डोमिनेटिंग ओवर इंग्लैंड. इंडिया इंग्लैंड के ऊपर हावी था जिसकी वजह से हम आज मैच जीत गए. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट 3 इनिंग्स फर्स्ट. First innings belonged to India. India ने एक decent total put up किया despite the fact that only and only Yashasvi Jaiswal was the batter who held his ground, anchored the innings and was able to score a double century. He had minimal partnerships with other batters जिन्होंने ज़्यादा contribute नहीं किया. Apart from him, the highest score I think was around 32 runs. So there were no major partnerships or this total would have been much higher. So apart from Yashasvi Jaiswal, there was no other batter who was very successful in handling the England bowling attack. जवाब में इंग्लैंड ने शुरुआत तो अच्छी करी लेकिन जसप्रीत बुमराह of course had his day. He took a 6 जिसकी वजह से इंग्लैंड की पारी जो है 253 पे आउट हो गई, which meant that India had a lead of 143 runs. Now with that kind of a lead, you would think that Indian batters would come in. Yashasvi Jaiswal would probably give it the same kind of performance that he did in the first innings. There were other, batters also who would probably contribute. Maybe there will be a huge partnership. And based on that, maybe India will be able to put up a 600 ka lead on the board. And ideal situation wahi rehta, lekin aisa hua nahi. Indian batters succumbed to some good bowling and some poor stroke play on their side, because of which the lead that we could manage was less than 400 runs. England needed only a 399 to be able to win this match on the 4th day of the match. And in true Bazball style, England के players ने जो बयान दिए, एंडरसन ने या इवन क्रॉली ने, कि हम तो भाई 600 का भी टोटल होगा तो चेस कर लेंगे. दैट्स व्हाट आवर कोच हैज सेड. हम तो बैसबॉल प्लेयर हैं, हम तो बैसबॉल के अंदाज में खेलेंगे. वी विल नॉट बी अफ्रेड, वी विल गो अटैकिंग एंड हम लोग तो 600 का भी टोटल चेस कर सकते हैं. ऑन द 5th डे आल्सो वी कैन बैट. दिस इज व्हाट दे सेड. एंड आई थिंक कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बैसबॉल में जो अटैकिंग क्रिकेट है, इट इज मेंट टू प्ले विद द साइकी, विद द मेंटल स्टेट ऑफ द ऑपोजिट टीम. और यही वो बयान की करने जो उन्होंने बयान दिया उसकी कोशिश थी, दैट दे प्ले विद द मेंटल साइकी ऑफ द ऑपोजिट टीम, ऑफ द इंडियन टीम, और इंडियन टीम बचाए उस बैसबॉल अप्रोच से जो इन्होंने नहीं छोड़ा थ्रू आउट द 4th innings also. And then maybe things would be going their way, which is probably what they hoped for. लेकिन thankfully ऐसा हुआ नहीं, because somewhere India and Indian team believed in itself. Indian bowlers had that belief. Jasprit Bumrah had that belief that he can put a dent in their innings. He can do things as India would like. और कल के दिन का play खत्म होते होते they had lost 1 wicket. 63 runs जरूर थे on board, but they had lost 1 wicket. So opening partnership, which was a decent one, was broken. आइडियल सिचुएशन में जो नाइट बैट्समैन आया था, नाइट वॉचमैन या नाइट हॉक जो भी उसे कहा जाए, रेहान शुड हैव बीन आउट यस्टरडे इटसेल्फ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बट नेवर माइंड, आज सुबह कुलदीप यादव वाज एबल टू टेक हिज विकेट. लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, मुझे कल रात को नींद नहीं आई. आई वॉज स्कैर्ड. मुझे लग रहा था कि क्या पता ये बैसबॉल अगर चल जाए तो, इफ दे आर एबल टू डू समथिंग लाइक व्हाट दे डिड टू इंडियन बैटर्स, how they got the wickets on the last day in the previous match, यहाँ पे अगर वो हमारे बॉलर्स के साथ कर रहे हैं और they are able to chase down this total. After all, they have a record of chasing down about 373 runs. लेकिन then कुछ मेरे दिमाग में आता था कि नहीं भाई 399 चेज नहीं होता.
देन आई वुड थिंक कि भाई लेकिन उनके बैटर्स एंड बैसबॉल अप्रोच, एंड देन आई विल से हमारे पास भी तो बुमराह है. देन आई विल थिंक कि अरे उनके स्पिनर्स ने इतने अच्छे से हमारी सारी टीम को क्रम्बल डाउन कर दिया, हमारे पास भी तो अच्छे स्पिनर्स हैं, अश्विन है, कुलदीप है, अक्सर है. और यही सब सोचते सोचते आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट. फाइनली व्हेन इट वाज मॉर्निंग आई वाज एबल टू पुट ऑन द टीवी, और इनिशियली मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था बिकॉज थिंग्स वर नॉट गोइंग एज ग्रेट. एक बार रेहान का विकेट लेने के बाद भी ऑली पोप और क्रॉली के बीच में एक पार्टनरशिप लगी, जिस टाइम पे थोड़ा सा डर लग रहा था. लेकिन ऑली पोप जो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, व्हाइल क्रॉली ऑन द अदर एंड वाज प्लेइंग अ लिटिल रेगुलर टेस्ट क्रिकेट. ऑली पोप का जब विकेट गया तो उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला. एंड आफ्टर दैट इफ यू आस्क मी, कोई भी ढंग का पार्टनरशिप लगा नहीं एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन विच वाज बिटवीन फोक्स एंड हार्टली. बट डिस्पाइट दैट हर पार्टनरशिप ने डराया ही. जब तक विकेट नहीं गिरी डर आता था, बिकॉज दे वर प्लेइंग देयर बेसबॉल क्रिकेट, दे वर अटैकिंग. अगर एक एंड पे एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो दूसरे एंड पे दूसरा बॉलर पिट रहा है. Sometimes 2 fours in an over, sometimes more than that, sometimes less. On one end, if there is a maiden going, on the other end, there are leaking runs. I mean, every batter was trying to play baseball. जो रूट की 16 रन की जो पारी थी वो सिर्फ 10 बॉल्स की थी. Ollie Pope also scored 23 in just 21 balls. So yes, they did get out, but they were playing fearlessly before their wickets fell. फिर जब बेन स्टोक्स क्रीज पे आए तो मुझे लगा कि लेट्स सी इस बार वो किस तरह से आउट होते हैं. So the same exasperated expression on his face after losing his wicket to Bumrah. तो इस बार भी उन्होंने अपने स्टंप पे ही बॉल लगाई, लेकिन of course it was not through Bumrah, it was through Shreyas Iyer. तो जैसे उन्होंने श्रेयस अय्यर का कैच पकड़ के, एक काफी ब्रिलियंट कैच पकड़ के श्रेयस अय्यर को आउट किया था, और उसके बाद जो जेस्चर किया था, श्रेयस अय्यर ने वही जेस्चर किया राइट आफ्टर ही गॉट हिम आउट थ्रू अ डायरेक्ट हिट. एंड वो जितना कैजुअल रन उन्होंने लिया, मुझे पता ही नहीं वो कर क्या रहे थे. आई मीन आई वाज रियली सरप्राइज्ड. इनफैक्ट सो वाज एवरीबॉडी एल्स कि ये व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू. वो भाग कैसे रहे थे? वो तो he was in no hurry. He took a very casual run and he got out on that. It wasn't a misunderstanding. It wasn't, some kind of a brilliant, kind of a fielding. ऐसा कुछ भी नहीं था. It was just Ben Stokes not realizing that he can get out on this ball and casually running to the other end. But I'm not taking anything away from Shreyas Iyyer's brilliance, his brilliant throw that did get him out. लेकिन उसके बाद जिस पार्टनरशिप ने तंग किया, that was the partnership between Ben Fowkes and Tom Hartley, the 8th wicket partnership. दोनों ने काफी अच्छे runs बनाए. Both of them made 36 runs. They were the highest scorers after Crawley in the entire innings. So उस टाइम पर भी जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा सा डर था दिल में. लग रहा था कि you never know, because even the commentators were saying कि they stay there for some time and suddenly England needs less than 100 runs. So with their baseball approach, अगर एक भी बैट्समैन टिक जाता है तो anything is possible. But then Bumrah is there, why fear? Bumrah ने एक amazing cotton ball लेके Ben Fowkes का विकेट ले लिया, and उसके बाद it was just a matter of time. I had hoped, in fact I tweeted also that it should be a victory of over 100 runs, which it was finally. Tea break होने में सिर्फ 4 मिनट रह गए थे when finally we were able to take the last wicket and we won the match. So that was a little summary about the match. Now I want to talk about those 3 things that I was telling you about, जो कि मुझे लगता है इस मैच की वो लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमें इस मैच से लेनी चाहिए. द फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज फॉर आवर बैटर्स. जिस तरह की परफॉर्मेंस वो अभी तक दिखा रहे हैं इन दोनों मैच इनिंग्स में और इससे पहले वाले मैच में भी, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वी लॉस्ट दैट मैच बिकॉज ऑफ पुअर बैटिंग. हम अपने होम ग्राउंड पे स्पिन के अगेंस्ट अगर नहीं खेल सकते हैं, सो दैट इज अ वेरी वेरी सैड थिंग, बिकॉज इंडियंस, फॉर दैट मैटर इंटायर साउथ ईस्ट एशियन country people, cricketers from the Southeast Asian nations, cricket playing nations, are known for their ability to play spin. ये जो ट्रैक्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसे हम होम ग्राउंड कंडीशंस कहते हैं, होम कंडीशंस कहते हैं, उसमें एक मेजर पार्ट होता है पिच का, जिसे स्पिन टर्नर बनाया जाता है टू फेवर द इंडियन कंडीशंस, टू फेवर द इंडियन बॉलर्स. और अगर इंडियन बैट्समैन ही उस पर फेल हो जाते हैं, देन हाउ इज इट गोइंग टू बी ऑफ एनी एडवांटेज? So they need to improve their technique. They need to implement the good technique that they have, the skills that they have. And ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही बैट्समैन फायर हो रहा है, चाहे वो शुभमन गिल हो या यशस्वी जायसवाल हो.
एक इनिंग्स में एक ही बैट्समैन फायर हो रहा है और बाकी सारे जस्ट उसको थोड़ा बहुत सपोर्टिंग रोल देके कैमियोस प्ले करके जा रहे हैं, somehow एक टोटल लग जाता है and then it's up to the bowlers to defend. It should not be like that. So the batters need to up their game. They need to pull up their socks and come up with better performances. That's the one learning outcome from this particular game. The second learning outcome is for the body language and the attitude of not just the team but also the team management. रोहित शर्मा के बारे में ये बहुत ज्यादा कहा गया है in this match by the commentators, by the fans, that his body language was a negative one and it affected the entire team. सबके shoulders drooping थे, सबके चेहरे पे frustration obvious थी, and because of that frustration, they were not able to get the results that they wanted. And it was very, very evident. Now, I have to say that this is a problem that is faced by all the South Indian nations, the cricket playing nations of Southeast Asia. If you look at a New Zealand or an Australia or South Africa or England, their approach, their mental status, the way they are able to dominate the mental state of the opposite team. चाहे वो हारे या जीते, that doesn't matter. You never see frustration, you never see defeat in their body language, on their faces. And that's one thing which is lacking, which has been lacking in India since forever. If you ask me, there are only 3 captains, in my opinion, who have, the same approach as these Sera country, cricketers, the ability to mentally dominate and to not let them mentally dominate you. And those 3 captains, those 3 players who also became captains are Virat Kohli, MS Dhoni, and Kapil Dev. And it was that approach, the Kapil Dev's never say die, do not fear, we can do this. That approach which won us the 1983 World Cup. I truly believe that. And the same, or the lack of the same approach, is what cost us this last World Cup. I truly believe that also. If you go back and see the Travis Head innings, the innings that Australia were playing, I mean, the strategy that Australia had against India to win that final was to dominate and to mentally completely own India, its fans, silence them, and that's what they did. That is where we were lacking. That is the problem that we had. And that is the problem that we still continue to have. If things go our way, then everything is fine. आज विकेट्स गिर रही थी, सब लोग हाइप्ड अप थे, सब लोग एक्टिव थे, एवरीबडी वाज टोटली चार्ज्ड. लेकिन अगर विकेट्स नहीं गिरती हैं तो वही सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन चेहरे पे दिखने लगती है, बॉडी लैंग्वेज पे दिखने लगती है, एंड दैट अलाउज द ऑपोजिट टीम टू become even more dominant on us. So that's the second learning that we have from this match, to do something about this mental state. We do have, for the past few years, we've been having these mental mentors or, mental coaches that go with the team. But उनका काम शायद बहुत अच्छा नहीं है, या वो, अभी कुछ lacking है उसके काम में, because वो कुछ करने की जरूरत है. We cannot continue having this body language. We should be able to show that aggression. Now, when Virat Kohli is on the field, when Virat Kohli is, while he was the captain, that's another reason why Rohit Sharma's captaincy is now being compared to Virat Kohli's captaincy, because he was able to never say die attitude के साथ में field set करना, fielding करना, fielders को charged up रखना, which he does even now, despite the fact that he is not the captain. So this is an attitude, of course, which MS Dhoni also had. He was always charged up, even though he was captain cool. It was not about the fact that you have to show, yourself to be very hyped up. But the approach is that we are not going to give up. The frustration should not show on our faces. Never be frustrated. Never have the negative, body language or outlook, which is what Dhoni never had. So that's one thing which we really, really, really need to amp up, to pick up, to understand and implement in our approach. So that's the second learning outcome, which I believe comes out of this match. And then there is the third learning outcome. That third learning outcome, my friends, is for all of us, the fans. We are truly, truly negative people ourselves, especially again the Southeast Asian nation fans. Why is it that we don't trust or we don't put faith in our players? Why is it that when somebody fails for a few times, his past record doesn't matter, his skill doesn't matter, his ability doesn't matter, we just write him off? The example in this match is Shubman Gill.
कितनी गालियां दी हैं हमने उन्हें इन द पास्ट फ्यू मैचेस जब वो फेल हो रहे थे, कितना उनके अगेंस्ट राइट ऑफ किया गया, उनको बिल्कुल मना कर दिया गया. आई अंडरस्टैंड दैट इंडिया में इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं, 120 करोड़ की आबादी में 11 स्लॉट्स हैं. यही 11 स्लॉट्स अगर पाकिस्तान या किसी और कंट्री की टीम में है तो दैट्स ओनली आउट ऑफ 25 करोड़ और समथिंग लाइक दैट. बट यहाँ पे 120 करोड़ लोगों की आबादी में वो 11 स्लॉट्स है, एंड देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल हु आर कंटेंडिंग फॉर दैट स्लॉट. सो द मोमेंट यू स्लिप अप एंड गो, somebody else is ready to take that spot. Understandable. लेकिन does that mean that we leave faith or lose faith in a player so easily? शुभमन गिल को जब ये बोल दिया गया कि फाइनली अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया तो हम आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए बोलेंगे, बिफोर यू प्ले any other test matches, before you get selected again for the test matches, you need to play domestic cricket again. और उसके बाद उन्होंने जाके परफॉर्मेंस दिखा दिया according to इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने आके सेंचुरी लगा दिया. लेकिन सच तो ये है कि he is a very capable batter. I mean, look at his record. 10th century at the age of 24, 10 test centuries. That's saying something. तो हम क्यों उनको राइट ऑफ कर रहे थे, क्यों उनकी जगह पे किसी और को लाने के लिए कह रहे थे? Doesn't that break the rhythm of the team as well as the player? अगर हम बार बार ऐसे चेंजेस करते रहेंगे और नए नए प्लेयर्स को लाके एक ही जगह पे दूसरा, दूसरी जगह पे तीसरा लाते रहेंगे, then it's just going to break the rhythm of the team. And when the players do not know if they are secure in the team, even they will not be confident, their performance will get hampered. So let's show some faith in our players, guys. Let's give them the encouragement that they need and not the discouragement that they really don't need and they don't even deserve. The latest case being KS Bharat. I know that he has not performed as a wicketkeeper. He is still getting conditioned, and as a batsman also, but so have others. If he has failed, so have others. We are completely going against him. We are asking him to be replaced by a Rajat Patidar so that Sarfaraz Khan can come into the playing 11. Maybe we are comparing him to a Rishabh Pant. Unfortunately, Rishabh Pant is not in this particular playing 11. He cannot be because he's injured. Trust me, there's nobody else I would rather have in the team. As a wicket-keeper batter, he is perfect. But I will tell you one thing. Even when he came initially to the team in the capacity of a wicket-keeper, I compared him to MS Dhoni. I always thought that he was not as good as MS Dhoni. His batting also lagged. His wicket-keeping skills were not up to the mark. And especially having seen Dhoni's, skills, उसके बाद में एक नया कीपर आता है, हम उसको उसी लेवल का एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, एंड व्हेन ही इज नॉट मैचिंग दैट लेवल एंड इन फैक्ट नॉट मैचिंग इट बाय क्वाइट सम मार्जिन, तो हम उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं. दिस इज वेरी वेरी ऑपोजिट इज व्हाट हैपेंड. बट देन ही इंप्रूव्ड हिज स्किल्स, ही कंडीशनड हिमसेल्फ, एंड देन गाबा हैपेंड. सो बैटिंग में भी उनकी मास्टरी जो है वो the whole world recognizes it. But then he was given opportunity, he was given the chances. अब केएस भारत को इतनी जल्दी राइट ऑफ करने की क्या जल्दी है हमें? क्यों नहीं हम उसे कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे? क्यों नहीं हम उसे इंकरेज कर रहे? उसके मेंटल स्टेट पे क्या फर्क पड़ता होगा जब वो देखता होगा all those tweets and all those messages and all those news items about him where it's written that fans are not happy with KS Bharat, fans want him replaced, commentators talking about it. It's just not done. Let's give him encouragement. Let's give him faith. Let's give our team management faith, who have put their faith in him and brought him into the team. There must be a reason. They must have seen a skill. He is going to show that skill. After all, ये home conditions है. अभी 2 ही मैच हुए हैं. Let's just wait for the third match. हो सकता है कि we will be able to see a star in the making. हाँ, अगर बहुत ज्यादा मौके दिए जाएं और वो मिस हो जाएं तो बात अलग है. लेकिन अगर अभी टीम और मैनेजमेंट उस पर भरोसा कर रहे हैं तो हमें भी एज फैंस भरोसा करके राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. सो दिस इज द थर्ड लर्निंग आउटकम दैट वी हैव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गेम. आई होप आप लोगों को मेरी बात सही लगी हो. आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो. Let's continue to support our team in a positive way. Let's give them the encouragement. Let's coax them to be positive on the field so that they can perform better. Let's hope that we win the rest of the 3 matches, because winning by a 4-1 is going to be great for us. We'll be right at the top of the points table for the World Test Championship. So we are ending the discussion here. Please subscribe to my channel. I will be posting regularly pre and post the matches. As of right now, my son, who is in 10th standard, will be giving his board, so I will need to give him more time.
Please wish him luck. And let's wish our heroes also luck for the rest of the matches. Thank you for watching this video. Have a good one. Bye bye.